अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में 1300 से ज्यादा काम जल जीवन मिशन के अंदर मंजूर किए गए 2024 में, और केंद्र की निधि जो 40 करोड़ रुपए मिलना था उसमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपए मिले। उस वजह से 578 काम ही पूरे हो सके हैं और 724 काम अभी भी बचे हुए हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के नागपुर को जो बकाया निधि है वो दी जाए, ताकि जिस तरीके से जल शक्ति का विषय आता है तो देश के प्रधानमंत्री को भगीरथ करके अपन बोलते हैं, तो सही में भगीरथ है क्या? जबकि 2024 में जो योजना कंप्लीट हो रहा था उसको 2027 तक के एक्सटेंशन कर दिया आपने। धन्यवाद माननीय। अच्छा किया, एक्सटेंशन किया, लेकिन आपने उसमें नए काम लेने वाले हैं क्या? जो कामों की त्रुटि है वो पूरी करने वाले हैं क्या? धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे देश के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मैं जिस सीमांत क्षेत्र थार के मरुस्थल क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर से आता हूं, उस क्षेत्र की जनता आज भी पीने के पानी के लिए मोहताज है, मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज है। जल जीवन मिशन योजना 2019 के अंदर शुरू हुई और जिसका उद्देश्य था कि 2024 तक हर घर को स्वच्छ जल पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 10 से 15% काम भी नहीं हुआ है, और जहां पर प्रशासन द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि इन घरों के अंदर पानी पहुंचा दिया गया है, हकीकत यह है कि उन घरों के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस योजना के अंदर बड़े स्तर के ऊपर घोटाले हुए उनकी जांच कराई जाए और मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर हमेशा पानी का संकटग्रस्त क्षेत्र रहा है। धन्यवाद महोदय। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो अनाज की खरीदी होती है, मेरे संसदीय क्षेत्र गढ़चिरौली चिमूर में धान माने चावल ज्यादा पैमाने पर उगाया जाता है। इस समर्थन मूल्य पर जो खरीदी होती है वो खरीदी सोसाइटी के माध्यम से होती है, और वो राइस मिलर्स को वो मिलिंग के लिए धान दिया जाता है जाके चावल बनाए और एफसीआई के गोडाउन को वो सप्लाई करे। लेकिन ये राइस मिलर्स बहुत बड़ा घोटाला करते हैं। वो जो चावल जो बनाते हैं, जो एमएसपी पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पे धान खरीदा जाता है, उससे जो चावल बनता है वो बाहर मार्केट में बेचते हैं, और न्यूनतम क्वालिटी का जो सड़ा हुआ अनाज है वो बाहर से लाकर वो एफसीआई के गोडाउन को सप्लाई करते हैं, और वही फिर पीडीएस के सिस्टम के माध्यम से राशन दुकान से लोगों को दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो ये राइस मिलर से घोटाला करते हैं उनके ऊपर पाबंदी लाई जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी इंक्वायरी की जाए, इतनी मैं मांग करता हूं। मैं प्रयागराज से आता हूं। यहाँ लगभग 70 लाख की आबादी वाला जिला है, लेकिन कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं है। इसके बगल में चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ मध्य प्रदेश के रीवा, सीधी, सतना, मैहर आदि क्षेत्र के मरीज भी प्रयागराज आते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, प्रयागराज जैसे महत्वपूर्ण जिले में जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु आए, जिसका महिमा गुणगान प्रधानमंत्री जी ने भी किया, लेकिन एम्स अस्पताल देने के नाम पर कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूं, प्रयागराज का अगर कोई मरीज दिल्ली में आकर इलाज कराता है तो 2-2 साल तक उसको एम्स में वेटिंग में जगह मिलती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज एम्स की बदहाली का हाल ये है, फैकल्टियों में चिकित्सकों की कमी का हाल ये है कि मरीज मर जाता है लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, नई दिल्ली में डॉक्टरों के 390 पद खाली हैं, 115 प्रोफेसर और 275 सहायक प्रोफेसर के पद हैं। भोपाल एम्स में 73, भुवनेश्वर में 78, जोधपुर में 85, ऐसे सारे। मैडम स्पीकर, मैं अपने क्षेत्र पटियाला जो कि मालवा का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उस सारे क्षेत्र के लिए जो रेल सुविधाओं की बहुत कमी है, लगातार पिछले 10 साल से अवहेलना हो रही है।
हालांकि राजपुरा बठिंडा तक लाइन का दोहरीकरण भी हो चुका है, बिजलीकरण भी हो चुका है, परंतु फिर भी अभी तक वहां कोई प्रीमियम ट्रेन नहीं चलाई गई, कोई वंदे भारत नहीं चलाई गई, कोई जन शताब्दी नहीं चलाई गई और सिर्फ 10% सुविधाएं इस मालवा क्षेत्र को जो पंजाब का 2/3 बनता है उसको दी जाती हैं, जबकि बाकी पंजाब के 10% क्षेत्र को 90% सुविधाएं दी जाती हैं। मैं इस जो भेदभाव हो रहा है हमारे क्षेत्र से, पटियाला से, मालवा से, उसके बारे में बेनती करना चाहता हूं रेल मंत्री से कि जो अवहेलना हो रही है हमारे क्षेत्र की, जो सुविधाओं की कमी है उसको पूरा किया जाए, वो प्रीमियम ट्रेन चलाई जाए, वंदे भारत भी चलाई जाए और अगर संभव हो सके तो जन शताब्दी भी चलाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन यहाँ भी माइक चल रहा है। भारत की बढ़ती क्रिप्टो करेंसी पूंजी योजना और इनके विनिमय की अनिवार्यता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत में क्रिप्टो करेंसी धारकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप से क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर चुके, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस तो वसूल कर रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस विनियमन नहीं किया गया और न ही कोई नियामक निकाय गठित किया गया है। देश में कई क्रिप्टो पूंजी योजनाएं चल रही है, जहां आम जनता को उच्च रिटर्न का लालच देकर ठगा जा रहा है। हाल में कई राज्यों में ऐसे घोटालों का पर्दाफाश हुआ है, जहां निवेशकों को हजारों करोड़ की पूंजी लूटी गई है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी का लेन देन विकेंद्रीकृत होता है, इसलिए निवेशकों के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा या शिकायत का निवारण तंत्र उपलब्ध नहीं है। मेरे क्षेत्र में 2 साल पहले कई जलसाजून क्रिप्टो करेंसी में शानदार आमदनी का झांसा देकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई। इसके बाद बोरा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी लोगों को ठगा गया। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कई देश हैं जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर और जापान ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त कानून बनाए हैं। अमेरिका में सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन और यूरोप में मार्केटिंग क्रिप्टो एसेट जैसे नियामक निकाय इस पर निगरानी करते हैं। मैडम कंक्लूड करने दो। मैं सरकार जब क्रिप्टो करेंसी से टैक्स वसूल कर रही है तो इसका विनियमन क्यों नहीं कर रही? क्या सरकार जल्दी ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रण करने वाला एक स्वतंत्र नियामक निकाय स्थापित करेंगी? क्या सरकार क्रिप्टो पूंजी योजना पर रोक लगाने? मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को एक अहम कनाल वाटर सिस्टम पे, जो मेरा हल्का फिरोजपुर है, उसमें 3 कनाल निकलती है, जो आज 1 अप्रैल से पैडी का सीजन शुरू होने जा रहा है। तो उसमें अभी उसका जो सिस्टम बना हुआ है 1965 का बना हुआ है, जब 1/4 एरिया आज के मुकाबले में वो इरिगेशन होता था। आज वो ही सिस्टम उसको इरिगेशन का जो नहरों का पानी दे रहा है। मैडम, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि फिरोजपुर का कनाल सिस्टम को दोबारा तो रीमॉडलिंग किया जाए, ताकि वो पैडी का, क्योंकि हमारे एरिए में बासमती चौल 11-21 सभी जो कॉस्टली है वो होते हैं, तो वहाँ का ग्राउंड वाटर नीचे हर साल जा रहा है। तो इसलिए उसको रोकने के लिए आप कृपा करें, बड़ा प्रोजेक्ट वो बढ़ा के दोबारा इस एरिया को पानी देने की कृपा करें। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सासाराम पार्लियामेंट के जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको मालूम होगा मैडम, बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, जाति जनगणना हुआ, और जातिगत जनगणना के अनुसार मैडम दिखाया गया 9.2% आज भी वैसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। अब सवाल उठता है कि डोम, चमार, मुसहर, दुसाद रहते कहां हैं जिनके पास जमीन नहीं है? चूंकि बड़े तादाद में SC ST के पास में जमीन नहीं है मैडम, रहते हैं सरकारी जमीन में, पोखरा पर, नाहर पर, और समय समय पर मैडम इनको अतिक्रमण लगा करके गांव के गांव उजाड़ा जा रहा है बिहार में मैडम। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का कहना है कि हमारा दिल गरीबों के लिए बहुत है,
लेकिन इन्होंने गरीबों को मिटा दिया। मैडम, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, आज से लगभग 15 साल पहले बिहार सरकार ने एक रणनीति बनाया था, विधानसभा में रूल पास किया था कि 3 से 5 डिसमिल जमीन चमार, दुसाध, डोम, मुसहर को दिया जाएगा। लेकिन आज भी मैडम 9.2% लोग ऐसे हैं जिनके पास में जमीन नहीं है। कब मिलेगा मैडम? आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। बिहार चुनाव सामने है मैडम, अगर नहीं मिलता है मैडम, इनको भुगतना पड़ेगा आने वाला समय में। आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं। श्री भजन लाल जाटव जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मैडम, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया। ये पूर्वी राजस्थान में करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। पूर्वी राजस्थान में एक ईआरसीपी की नहर परियोजना काफी समय से लंबित थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो ईआरसीपी लागू कर देंगे। ईआरसीपी की लागू करने के लिए समझौता भी हुआ। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था इस पार्लियामेंट में, और उसमें जवाब जो मैंने पूछा था, कितना एमयू हुआ, कितनी राशि स्वीकृत करी, कब इसका काम शुरू हो जाएगा। 2 मुख्यमंत्रियों के बीच समझौता हुआ, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच में समझौता हो गया। 1 साल समझौतों के हो गए, राशि का पता नहीं, एमयू का पता नहीं, टेंडर का पता नहीं, और एक घड़े का जल उधर से, एक घड़े का जल उधर से, दोनों को मिला दिया। इतना असत्य और इतनी असत्य सरकार ने झूठ बोल के वोट बटोर लिए। ये 13 जिलों का ये मामला है। ईआरसीपी लागू होना चाहिए। पानी की बहुत जटिल समस्या है। मैं यही मैडम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो एमयू हुआ है उसको शीघ्र धरातल पर लाने का काम करें। धन्यवाद। थैंक यू मैडम सर। शास्त्री का भी बहुत ही मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 जिलों को जोड़ने वाली सड़क NHI 128 रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर, जो 3 जिलों को हेडक्वार्टर को जोड़ती है, ये जब से बनी है तब से 2 लेन है। हमारी मांग है आपके माध्यम से सरकार से कि इसको 4 लेन किया जाए। इसके ऊपर 2 महत्वपूर्ण इंडस्ट्री एरिया और काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और हमेशा जाम लगा रहता है। तो मेरी दरखास्त है कि इसको धन्यवाद 4 लेन किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं PMAY जी के घरों के बारे में बात करना चाहता हूं। पिछले 5 सालों में हमारे क्षेत्र को 5000 घर भी नए आए, लेकिन आज एक ही साल में मेरे निरंतर प्रयास से 50,000 से ज्यादा घरों को टारगेट हमारे बीदर क्षेत्र को मिला है। इसलिए मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद बोलना चाहता हूं। लेकिन इस टारगेट में अभी सिर्फ 35% घर सैंक्शन हुए हैं और डेडलाइन की डेट थी 31 मार्च 2025। मैं सरकार से विनती करता हूं कि ये डेडलाइन को एक्सटेंड करना चाहिए और मेरा मांग है कि हमारे बीदर क्षेत्र को और ज्यादा 50,000 एडिशनल घर सैंक्शन करना चाहिए। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। महोदय, मैं झारखंड में रांची जिला जो वहां की राजधानी है, वहां से गुमला को जोड़ने वाली NHI 23 में आरकेडी कंपनी जो कार्य कर रही है महोदय, वहां दो माइनर बच्चे 17 साल के बच्चे को दो बच्चे को जो इकलौते बच्चे हैं जो 10th में फर्स्ट डिवीजन से पास किए, मिक्सचर मशीन में कैमरा महोदय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के रांची राजधानी NHI 23 जो गुमला को जोड़ती है, वह आरकेडी कंपनी जो कार्य कर रही है, जो माइनर बच्चे 17 साल के माइनर बच्चे का मिक्सचर मशीन या ग्राइंडिंग मशीन में दोनों की मृत्यु हो गई अध्यक्ष महोदय। और NHI का जो गाइडलाइन है उन बच्चों के प्रति
न केवल वहां के पूरी की पूरी व्यवस्था उनको बचाने का काम किया गया, साथ ही साथ माइनिंग सेक्टर में उन्हें पेनाल्टी भी लगाई। न एनएचआई के जो गाइडलाइन है, ना वहां पे पेड़ लगाए गए, ना तालाब खोदे गए। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि समुचित कार्रवाई की जाए और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद सभापति महोदया, धन्यवाद। मैं भारतमाला के विषय में बोलना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और कोरबा जिले में भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी 12 मार्च 2025 में इस विषय पर भी चर्चा हुई और बहुत अच्छी चर्चा हुई। राज्य सरकार ने आर्थिक अनियमितताओं तथा आपराधिक कृत्यों का होना भी स्वीकार किया। इस भारतमाला परियोजना में भारत सरकार की धनराशि का व्यय हुआ है, इसलिए प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि सीबीआई को जांच कराई जाए, लेकिन वहां के राज्य सरकार ने उसको अमान्य किया है और राजस्व कमिश्नर से जांच कराने की कहा है। उसी दिन शाम को छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने का भी निर्णय लिया। चूंकि मामला बहुत गंभीर है और केंद्र का है, 1,147,000 करोड़ का मामला है और ये रुपए। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैडम 1 मिनट, बहुत गंभीर मामला है। 1 मिनट हो चुका। केंद्र सरकार को आपराधिक षड्यंत्र पहुंचाए माननीय सदस्य श्री दिलेश्वर कामेत जी, सीबीआई से ही इस अपराध की जांच कराई जाए, ऐसी मेरी मांग है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की तिलहन और सोयाबीन के किसानों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, सरकार ने एनसीडीएक्स पर सोयाबीन वायदा कारोबार का प्रयोग कर नवंबर 2021 में सोयाबीन वायदा कारोबार पर रोक लगा दी, जिसके कारण किसान असहाय हो गए और भाव का बेंचमार्क नहीं होने के कारण किसानों को कटाई के समय अपने उपज के वायदा भाव का पता नहीं चल पाता है। वो मंडी के व्यापारियों पर ही निर्भर रहते हैं, जिससे मोल भाव करने की उनकी क्षमता बहुत कम हो गई है। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि सरकार एनसीडीएक्स पर तिलहन और सोयाबीन के वायदा कारोबार पर लगी रोक को तुरंत हटाए की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदया। और मैं आज आपके माध्यम से जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज के ऊपर जो बजट है, उसमें जो खर्च कम किया जा रहा है उसको आकर्षित करना चाहता हूँ। ग्रामीण विकास योजना के लिए हर वर्ष बजट भले ही दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर योजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ रही हैं और उसके ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित माननीय सदस्य सुश्री प्रिया सरोज जी, स्थायी समिति ने। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका ध्यान बहुत ही गंभीर और एक चिंताजनक मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। मेरा लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर राजस्थान, जो पाकिस्तान सीमा से लगता हुआ है, मेरे इस क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थ और अवैध हथियारों की बड़ी मात्रा में तस्करी हो रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही, इसके अलावा युवाओं का भविष्य भी खतरे में नशे के कारण। इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक उच्च स्तरीय समिति बने, कठोर कदम उठाया जाए। इसके अलावा भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र पर जो तारबंदी के साथ किसान हैं, उनको भी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। और हमारे यहाँ जो बीएडीपी का पैसा, बॉर्डर स्कीम का जो पैसा आता था मैडम, वो भी बंद हो गया, जिसके कारण विकास के काम भी हमारे क्षेत्र के रुक गए। मेरी मांग है कि इन सब बातों का ध्यान दे सरकार। मुझे आपने जनहित के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने दिया। मैडम, राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते हुए अत्याचार एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज राजस्थान में कोई महिला अपने घर में सुरक्षित नहीं, खेत में सुरक्षित नहीं, कॉलेज में सुरक्षित नहीं, गांव में सुरक्षित नहीं। स्थिति ये है कि महिलाओं की छेड़खानी की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं, गैंगरेप की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैडम इसमें भारत सरकार कर सकती है। मेरी जो मांग आपसे ये है, भारत सरकार में एक विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग, इसके पास फंड है, ये फंड देता है ताकि वहाँ की महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। और जो पीड़ित महिलाएं मैडम, ज्यादातर
गरीब तबके की है, ग्रामीण तबके की है, उनको सुरक्षा देना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों विषय में आपसे अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार को आदेश दें कि इसके लिए पुख्ता व्यवस्था करें। धन्यवाद मैडम। श्री बी मनिकम टेगोर। सर, क्वेश्चन 464 सर। जवाब पटल पर रखें। Thank you, sir. Thank you, sir. In the statement, Honorable Minister states that 9,21,448 trainees were trained at the operational IDTRs from 2015 to 2023, with a peak of 1,59,182 in 2019-20, followed by a decline in COVID times. However, no direct correlation is provided between this training and the reduction in the road accidents caused by the driver errors. Given that India reported 4,61,312 road accidents in 2022, with over 70% attributed to the human error as per the ministry's data. Can the Honorable Minister clarify how the government assesses the scheme's impact on reducing such accidents, and what specific metrics or studies link the training of 9,21,448 drivers to improve road safety outcomes? Thank you, sir. Thank you, sir. The recent RBI rule change requiring full repayment of gold loans along with interest after 12 months have imposed a significant financial burden on vulnerable sections of our society, including farmers, small business owners, fishermen, and low-income individuals. The gold loans have been a vital source of financing for these individuals, providing quick liquidating during critical times. However, the new rule has taken away the flexibility to renew loans by paying only the interest, forcing them to seek help from informal lenders who charge exorbitant interest charges. Sir, to address the issue, I propose the following: the jewel loans with easy interest payment and renewal options. Sir, education loans should be given without collateral security. Sir, most of the banks are asking for collateral securities, and hassle-free, collateral security-free loans for MSMEs also, sir. The RBI recent changes to the gold loan rule aims to promote a more transparent and secure gold lending ecosystem. But however, we must ensure that these changes do not inadvertently harm the common man. I request the government to reconsider the recent RBI rule change and provide relief to the vulnerable section of our society. Thank you, sir. Sri Balram Naik. Hey, you're third. You just start, I think so. लाए साहब बलराम नायक साहब नमस्कार साहब महबूबाबाद बोल के मेरे तेलंगाना में हमारा डिस्ट्रिक्ट है साहब एक वो महबूबाबाद एरिया में पूरा एजेंसी जो ट्राइबल लोग रहते हैं साहब वो ट्राइबल का क्षेत्र है साहब पूरा वो क्षेत्र में साहब नवोदय पाठशाला 2-3 स्कूल के लिए सख्त जरूरत है साहब वो विद्यालय जरूरी है रहना चाहिए साहब पूरा ट्राइबल एरिया है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर है साहब उस वास्ते मेहरबानी करके ये 2-3 विद्यालय हमारे को नवोदय जो स्कूल देने से बहुत अच्छा होगा साहब ट्राइबल के लिए जो गवर्नमेंट का आगे बढ़ाना ट्राइबल के लिए आदिवासी के लिए जो है वो इच्छा पूरा हो सकता साहब नमस्कार साहब श्री रवीन डी बाइकर श्री रवीन जी धन्यवाद। मैं इस सदन के माध्यम से वर्षा जेटी से जुड़े गंभीर मुद्दों का उठाना चाहता हूं। बेनी बेनन। Thank you, sir. Sir, India, with the world's largest youth population, is grappling with an alarming surge in drug abuse and violence and crimes. Mafia networks are actively trapping young minds, infiltrating colleges and education institutions to expand their influence. The illusion of social media and the glorification of violence in films are distorting reality, normalizing crime and aggression among the youth. Meanwhile, unchecked drug trafficking networks continue to spread poisoning and enter generation. Sir, Kerala is at a break point. In the last 2 months, many brutal murders have been reported. Political backing and social tolerance of criminals have emboldened lawless, pushing society to the brink of chaos. The drug means
is no longer confined to urban centers. It has infiltrated schools, colleges, and even rural areas, affecting families across the social stratas. Sir, this is no longer just a law enforcement issue. It is a national crime. Awareness, it's a 1 minute. Awareness along onward. The government must act decisively with strict enforcement, harsher and punishment, and a zero-tolerance policy towards drug peddlers and violence offences. Sir, strengthening the border security, enhancing intelligence network, and launching national-wide crackdowns on drug syndicates are crucial. Education institutes must be safeguarded from becoming hubs of drug collection. A dedicated task force should be formed to combat the growing drug crisis with the central and state investors. Sir, the central government must prioritize this crisis with urgent policy and intervention and swift decisive action. Thank you, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण एवं हृदय विदारक घटना पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा डिसा तहसील के एक पटाखे के गोडाउन में आग लगने से 20 से अधिक निर्दोष श्रमिकों की मौत हो गई तथा 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। महोदय, 20 में से 19 श्रमिक मध्य प्रदेश से गुजरात में रोजगार के लिए आए थे और अपनी जान गंवा बैठे। मैं इस घटना में मृतक व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं तथा इनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। गंभीर रूप में घायल श्रमिकों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करती हूं और केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग करती हूं कि मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए। मैडम, 1 मिनट, आपका स्टेट का है। नहीं, मात्र 1 मिनट, कंक्लूड करिए। कर दे दी। मृतकों को परिवारजनों को 5-5 लाख रुपया सहायता राशि प्रदान किया जाए। Thank you, Madam Chairperson. I rise today to highlight an urgent issue concerning consumer safety. Recently, the Bureau of Indian Standards raided warehouses of e-commerce giants Amazon and Flipkart in Tiruvallur, Tamil Nadu and Delhi. They seized thousands of products worth over 1 crore being sold without mandatory BIS certification or with fake ISI marks. These included everyday household items like stainless steel bottles, geysers and food mixers and sports items, products that if substandard can pose serious health and safety risks. This is not an isolated incident but a growing and alarming trend. E-commerce platforms dominate the online market space, yet many continue to allow uncertified products to be sold, misleading consumers who trust these platforms for quality and safety. While the BIS Act prescribes penalties, enforcement only happens after raids. By then, many unsafe products have already reached homes across India. I urge the Honourable Minister, through you, Madam, strengthen BIS enforcement to prevent the sale of uncertified goods at the source, promote the BIS care of so consumers can verify certification before purchase, hold e-commerce platforms accountable, ensuring that they list only BIS certified products, strengthen the legal framework to ensure no company is able to escape from the consumer product quality and standard. Thank you. Thank you very much, Madam. I would like to draw your attention to the distressing situation involving 7 Indian seafarers who pirates at sea have kidnapped. Among them is Sri Rajendran Bhargavan from my constituency, Kasaragod, along with another individual from Cochin, Kerala. The other 5 seafarers are from different parts of India. These incidents occurred aboard the ship Bittu River, managed by Maritech Tanker Management Private Limited. Madam, the journey began on September 6, 2024, and the last contact was made on March 17, 2025. On March 18, the families were informed of the hijacking. Sri Rajendran's family, hailing from a poor fishing community, is in severe distress. His wife, who is in the advanced stage of pregnancy, is living in fear and uncertainty, without any updates of the safety. The families of other kidnapped crew members are also experiencing similar anguish. This matter is of national concern. Therefore, I urge upon the Government of India to take
immediate and decisive action to locate and rescue the 7 Indians and provide relief to these families and ensure the safety of all. Thank you, Madam Speaker. Today I rise. Thank you, Madam Speaker. Today I rise to bring before the notice of the House a unique and historical significant form of theatre called theatre, which is a concrete theatre existing in Goa for 133 years. Now, theatre remains the only popular theatre form in Asia that is truly democratic, secular, community-oriented and independent of elite and feudal influences. I request the Ministry of Culture, Government of India to take immediate steps to initiate and support the process of seeking UNESCO intangible cultural heritage inscription for theatre. I would like to place a few demands before the Ministry of Culture. First, recognize theatre as a nationally important cultural tradition and take all necessary measures to ensure its promotion, conservation and documentation. Establish a task force committee under the Ministry of Culture in collaboration with the Government of Goa and representatives from the theatre community to facilitate the process of UNESCO inscription. Third, encourage national and international research, academic collaboration and digital archiving of theatre performances to preserve its historical, artistic and... माननीय अध्यक्ष महोदया, मी या सभागृहाचे लक्ष धुळे लोकसभा क्षेत्रातील बागलांमध्ये आदिवासी संग्रहालय ट्रायबल म्युझियम स्थापन करण्याच्या तातडीच्या गरजेकडे लक्ष वेधू इच्छिते. माझ्या बागलाण तालुक्यामध्ये 150हून अधिक आदिवासी गावे आहेत. इथे पारंपरिक कला, हस्तकला, वारली पेंटिंग आणि संस्कृती यांचा अनमोल ठेवा आहे. या संग्रहालयामुळे आदिवासी संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन होईल. बागलांच्या आदिवासी संस्कृतीबरोबरच मांगीतुंगी हे जैन धर्माचे प्रमुख तीर्थस्थान आहे. तेथे भगवान ऋषभदेव यांची 108 फूट उंच इमारत आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा साल्हेर मुल्हेर किल्ला आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित युनेस्को विश्व वारसा स्थळ आहे. यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि स्थानिक आदिवासी कारागीर व उद्योजकांना आर्थिक लाभ होईल. मी माननीय आदिवासी विकास मंत्री आणि सांस्कृतिक मंत्री यांना विनंती करते की या संग्रहालयासाठी आवश्यक निधी त्वरित मंजूर करण्यात यावा. हे पाऊल आदिवासी वारसाचे संरक्षण आणि सामाजिक आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे ठरेल. या प्रकल्पाचा फायदा फक्त राज्यातीलच नाही तर देशातील इतर आदिवासी समूहाला देखील नक्कीच होईल. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. Madam Chairperson, I am raising very urgent and important matter which has happened in Jabalpur, Madhya Pradesh, where Catholic priests and laity were brutally attacked by Hindutva extremists. On April 1st, 2025, a group of Catholic pilgrims from Mandla parish who were peacefully participating in Jubilee 2025 religious observance were unlawfully detained twice by extremist elements and subject to violence. Notably, when senior priests, including the Vicar General of Jabalpur, arrived to support the victims, they too were assaulted. Such brazen attack on religious minorities not only violate constitutional right, but also expose the growing climate of intolerance and impunity for extremist violence. Despite claims of disassociation by the RSS, the incident raises serious concern about the law and order, religious freedom, and the safety of the citizens practicing their faith. The government must take urgent, decisive action to ensure swift and impartial action against the perpetrators. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री हमदुल्लाह सईद जी. Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak. I would like to draw the attention of the government to the critical situation concerning 7 Indian seafarers aboard Panama flag vessel MV Bitu River, which was attacked by armed pirates off the coast of Sao Tome and Principe on 18th of March 2025. Among those affected is young Asif Ali from Minicoy Island, Lakshadweep, and the family remains without any information about his safety or whereabouts.
These 7 Indian nationals who were simply pursuing their livelihood at sea to support their families back home now face grave danger in foreign waters. It is deeply concerning that these citizens remain unaccounted for more than 2 weeks after the attack. The situation has created immense distress for the family, particularly for the concerned families like the parents of Mr. Asif Ali from my constituency, who are desperate for any news about their son. The lack of communication and visible action from our authorities has only compounded their suffering. I urge the government to take immediate steps to resolve this humanitarian crisis. Our diplomatic missions should be activated without any delay to establish contact with the affected seafarers and coordinate their safe return. I urge the government that robust mechanism must be implemented to better protect Indian seafarers working in high-risk zone. I request the government to take specific measures, including establishing a special task force to monitor such cases and provide regular updates to the anxious families. The safety and well-being of our citizens abroad must be treated as a priority. I humbly request the government, especially the External Affairs Ministry, to act promptly and to ensure these 7 Indians who are brought back home safely at the earliest. Thank you, ma'am. Thank you, Madam Chairperson. I feel really deeply denial of the central fact that very reluctant by the government and the false vision and the future. Perhaps maybe soft power referendum embrace benevolence. I'm worried about the students polarizing. It's not just that they express their dangerous sense, but it might add to the antisocial, Madam Chairperson. Now we could see the Nehru, the oldest university in the Northeast, the oldest centralist university. It's been systematically attacked. The Northeast has been systematically attacked. Even the budget, when you look at, it's very, very low. 99.9%, almost zeroing, Madam Chairperson. Now, lots of students, they have gone for the hunger strike, and some of them has been hospitalized. But till that, there is no issue raised by the central government. Madam Chairperson, I would like to request the central government at least go to the zero ground and then diagnose the situation. What is the reality that is happening? Even the ranking of this university has gone down drastically. It was one of the best, but now the ranking has gone down. So therefore, Madam Chairperson, I would like to request and then condemn the Vice Chancellor. Because of him, the university has gone down, and because of him, the messiness in that university is happening. Therefore, Madam Chairperson, we should not only rely on the politics. Just messiness of the politics requires moderation, compromise, ultimately realism. Such civility requires a discussion, Madam Chairperson. Therefore, I would like to request at least try to. माननीय सदस्य श्री डीन कुरियाकोस जी. Thank you, Madam, for getting this opportunity. I would like to raise an important matter related with the Kerala states. Sir, Madam, the wage pending of Narega workers, they are under crisis, Madam. Last 3 months, they are not getting their wages. In the case of unskilled workers, rupees 578.12 crore, and material compound rupees 57.31 crore rupees are under pending. It is because of non-revision of labour budget of Kerala state. After December, we achieved our 90% of our labour expenditure, but this government, union government, is not doing the revision about that, Madam. Kindly take it consideration. And about NMMS, National Mobile Monitoring System, that is also creating more trouble to our poor workers. Above 55 years old women, how they can walk from one point to another point. Just before the information board, they have to take the picture, but they can't walk more than 3 kilometers, especially in my constituency. It is particularly about a hilly area. How can they walk from one place to another distance? That is, kindly take it consideration, and the wage disbursement is more important. Honorable Minister replied to in this floor, that means before April 10th it will be over. But I kindly urge upon here to kindly disburse the wage pending towards Kerala about my Narega workers. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री कार्तिक चिदम्बरम जी.
Madam, our banking sector has become like a low-cost airline. Like in a low-cost airline where you have to pay to check in your bag, to recline your seat, or even to get a sandwich or a bottle of water, our banking sector is now charging for even basic services. If you have to withdraw your own money from an ATM, you have to pay a charge. If you want to get an SMS for your balance, you have to pay a charge. If you want to get a checkbook, you have to pay a charge. And the most cruel thing is, madam, if your deposit drops below a minimum balance, they put you a penalty. As it is with this economy, every family is struggling and every individual is struggling. When their money dips in a bank balance, the bank is charging a minimum balance charge on them. I urge the Finance Ministry and the RBI to rationalize this and to make sure they become customer friendly. It is not very far away from a day when a bank will start charging people if they come to a branch and want to talk to a person. They are charging for everything which is basic and given for granted, and this must be rationalized, madam. Thank you very much. Thank you. Thank you, madam, for this opportunity. Thank you, madam, for this opportunity. Ma'am, I rise today to address a pressing concern that strikes at the heart of our democracy, freedom of expression. Ma'am, the recent attacks on the Malayalam film L2 Emburan, starred by the legend of Indian film Mohanlal and directed by none other than Prithviraj Sukumaran, written by one and only Murali Gopi, by the members of Sangh Parivar, BJP leaders and even a central minister, expose a dangerous trend of intolerance that we cannot ignore. Ma'am, who decide what is acceptable expression? If we allow mob sentiment or political agendas to dictate art, we risk losing our cultural soul. Their families are attacked. An actor like Mohanlal is forced to write an apology, ma'am. So we cannot accept this. The freedom of expression must be upheld. I ask this House to reaffirm our commitment to free speech. Let Emburan be a wake-up call, not a warning suppression, but a testament to resilience, ma'am. Thank you, Speaker, madam. Thank you for giving me the opportunity to talk on the rising MRP of pharmaceuticals. I wish to draw your attention to the recent decision by the National Pharmaceutical Pricing Authority, NPPA, allowing a 50% price increase for 8 essential medicines used in the treatment of asthma, glaucoma, thalassemia, tuberculosis, and mental health disorders. This decision will significantly raise the cost of 11 formulations of life-saving drugs, impacting millions of patients across the country, particularly those from economically weaker sections. While it is important to ensure the viability of pharmaceutical manufacturing, the government must also consider the affordability of essential medicines for common citizens. Therefore, I urge the Ministry of Chemicals and Fertilizers to take urgent steps to prevent undue financial burden on patients and ensure essential medicine remain affordable to all. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्रीमती के काव्या जी. Ma'am, here. Thank you for the chance, Madam. Madam, from my Warangal constituency, Kazipet Loco Running Depot is one of the biggest in the South Central Railway. It is to inform that more than 500 employees have been relocated to Vijayawada in the last 15 years. And a small Loco Running Depot in Vijayawada has now become a big one at the cost of Kazipet. It has come to my notice that currently the employee strength at Kazipet is now 526 against the sanctioned number of 709. Against this background, again the railway sanctioned 184 new postings to Kazipet Loco Running Station. Surprisingly, all of them have been allotted to Vijayawada Loco Running Depot, where 1100 employees are already working at Vijayawada. In this regard, I would bring to your kind notice that due to various reasons, the railway authorities are shifting large number of employees to Vijayawada, but not taking any effort to fill the vacant post in Kazipet. Through you, Madam, I humbly request the Honorable Minister of Railways, Government of India to kindly look into the issue माननीय सदस्य श्री रविंद्र चौहान जी. and take necessary steps for initiating to fill up the vacant post at the Loco Running Station, Kazipet. Thank you, Madam. Thank you, Chairperson. The National Medical Council has announced this year's schedule for postgraduate NEET examination. It is to be held on June 5th. But why it is being held on 2 shifts? No equality can be achieved if one examination is held in 2 separate shifts. Last year, when you introduced the 2-shift system, there was uproar among the students as the second shift question papers were considered much tougher than the first shift
question paper. Also, the National Medical Council did not release 2 separate results showing shift-wise performance. It was an admission that if the result were shown separately, it would have exposed the fact that one shift had easy question paper and the other shift had a tough question paper. Are the union government and the National Medical Council so inefficient? They cannot hold one simultaneously question paper for 2 lakh students. If you cannot hold one simultaneously examination for 2 lakh students, why are you talking about one nation, one election for 96 crore people in India? I request through you, the union government, please kindly have an examination for the postgraduate NEET examination students for one simultaneously examination. Thank you. Thank you, madam. I stand today to highlight the serious challenges faced by ASHA workers, who are the backbone of India's healthcare system. Despite their crucial role, they continue to struggle due to poor working conditions and low pay. I request the government to take urgent steps to declare ASHA workers as last-grade government employees across the country so that they will get reward for their work. ASHA workers handle multiple responsibilities, leading to heavy workload and health risks. Many suffer from malnutrition, anemia, and other diseases due to lack of proper support. Shocking fact is that their current incentive is 2,000 per month, which is highly inadequate to failing to reflect the critical nature of their services. Also, many are forced to spend from their own pockets for work-related expenses, pushing them further into financial distress. Madam, in Kerala, ASHA workers played a crucial role in effectively managing COVID-19 pandemic. However, the inadequate incentive in my constituency, Tirunelveli in Tamil Nadu, majority of people are farmers and depending only on agriculture. The wild boar, that is wild pigs, coming from the forest group by group, staying in the agri fields and destroying crops like banana, paddy and all other crops, and thereby causing huge loss to the farmers. Many times it attacks farmers and causing grievous injuries also. The union government is not giving any compensation. The wild boar is included in Schedule 3 of the Wildlife Protection Act 1972. It is a central act. If the farmers try to prevent the boars, the forest department is registering cases against them. Hence, I request the union government to remove the wild boar from Schedule 3 of the Wildlife Protection Act 1972. Thank you, ma'am. Thank you for giving me the opportunity, madam. This is regarding MMTS. My request to the Railway Ministry is, I come from the Bongiri constituency, which is 50 kilometers away. The last government, when the BRS was there, there was an approval for 412 crores for that line from Hyderabad from Gatkeskar to Yadgir Gutta. But during that period, that government was not very serious in acquiring the land and forest clearance. That was pending, madam. If this is cleared now, there is a lot of issue in regard to the transport which is very close to Hyderabad. I request the ministry to intervene and do these 412 crores immediately and do the MMTS so that a lot of transportation issues will be sorted out. It will increase the employment, it will increase the urbanization and also education. So please, I request on behalf of you to the ministry to take care of this. Thank you very much. Thank you, madam, for this opportunity. I've been trying to raise this. There is a young boy of 20 years old, Mukesh, has disappeared without any trace since March 16th. Near a place, the last known location is called Jozang Tet, which has become almost like a Bermuda Triangle. There's a case of Lintoy Ngambi and Hamanjit. 2 young people have disappeared during this crisis. We have these cases happening even today under President's rules, and I would like to draw the attention of the House as well as the Home Minister that the protection of life of the people is the paramount duty of our state. So I think I would like to draw the attention of the House to look into this case of Mukesh. That's among many cases that have been happening and just disappeared, and we don't care about what happened. Thank you, Honorable Speaker, Madam. I would like to draw the attention of the
Ministry of Tourism and Culture, urgent renovation of Beluru Shri Channakeshwar Temple and Shawnbergola Shri Bahubali Gomateshwar Temple in my constituency, madam. They are the symbol of our rich history, madam. The Channakeshwar Temple in Beluru showcases the incredible of craftsmanship of our Hoysala dynasty, which is a UNESCO recognized World Heritage Site. And Shawnbergola Temple is well known for the monolithic statue of Lord Gomateshwara and well known for Mahamastakabhisheka. However, these heritage sites are facing neglect, crumbling walls that threaten their beauty. This is an urgent matter, and I would urge the government through you, madam, for an immediate action. Thank you, madam. अध्यक्ष महोदया, केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाद्वारे आयोजित EPS 95 योजनेअंतर्गत आपल्याला माहित असेल की 1000 रुपये ते 4000 रुपये असं अल्पसा मानधन या सगळ्या पेन्शनधारकांना मिळत आहे. आणि निवृत्ती कर्मचारी नोकरीत असताना EPFO कडे मासिक पगारातून त्यांनी 1995 ला 415, 2001 पासून 551 आणि 2014 पासून 1250 असं अंशदान जमा केलेलं आहे. आणि जवळपास जीवनातील 35 ते 40 वर्ष त्यांनी आपल्या या सेवेत घालवले. देशाच्या उभारणीत आपलं अख्खं आयुष्य त्यांनी खर्च केलं. आणि आपल्याला माहित आहे की वृद्धापकाळात अल्पसं असं मानधन त्यांना मिळतं. त्यांचा रोजचा जो दैनंदिन खर्च आहे तो यामध्ये भागत नाही. EPS 95 योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी 5 ते 15 लाखापर्यंत केंद्र सरकारकडे जे मानधन जमा केलं आहे, साधारणतः 8 कोटी रुपये ते जमा आहे. आणि असे साधारणतः निवृत्ती कर्मचारी हे 80 लाखाच्या जवळपास आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की कोश्यारी समितीच्या अहवालानुसार या सर्व कर्मचाऱ्याचं मानधन हे 9000 रुपये आपण करावं आणि आरोग्य सेवा सुद्धा त्यांना देण्यात यावी. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री SS जमीर जी. Thank you. Madam, I wanted to bring to this House about the food and the public distributions problem. Because of the network problems and then the Aadhaar card, fingerprint is not reading. And for that matter, even in Nagaland state, in the ration card, we have 32,000 ration card holders' name has been deleted. Now the problem is because of that. The ministry directive is the manual distribution is restricted. Electronic win scale, the integrated e-post is embossed compulsory. And Madam, the Nagaland state, 2022-23, construction of Kotam 15 number court, but because of the land problem, it was delayed. So I'd like to request through your table that if that can be considered. Thank you. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman, Madam. जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यात अर्थात उत्तर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कापसाची लागवड केली जाते. 7 लाख हेक्टरपेक्षा लागवड केली जाते उत्तर महाराष्ट्रात. 2014 मध्ये लोकसभेची निवडणुकीच्या वेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी उत्तर महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कापसावरचे संशोधन आणि कापसावर आधारित उद्योगांसाठी विशेष कार्यक्रमांची घोषणा केली होती. मात्र 11 वर्ष होऊन उलटूनही यासाठी कुठलीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. दोंडाईचे इथे झालेले सभेत पंतप्रधान मोदींनी कॉटन हबच्या संदर्भात आश्वासन दिले होते, पण अजून ते पूर्ण झाले नाही. माझी मागणी या सरकारला आहे की उत्तर महाराष्ट्राला कापूस आधारित उद्योग आणि कापूस आधारित केंद्र त्वरित उभारण्यात यावं. धन्यवाद. Respected Madam, the drugs menace is creating a dangerous social problem in Kerala. Kerala is now flooded with drugs and it is available in every nook and corner of the state. It is reported that drugs worth of over rupees 25,000 crore reaching Kerala from other states including Gujarat and abroad. The drugs addiction, especially among the youth segment, the crime has increased in the state substantially. If we are not taking any strongest step, the future of youth generation of Kerala is at peril because of use of drugs. Therefore, I urge upon the government to make strict vigil by all agencies involved to deal with the drugs and narcotics to save the youth and future generation of Kerala. Thank you, ma'am. Thank you. நன்றி தலைவர் அவர்களே. என்னுடைய கடலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே கடலூரிலே மிகப்பெரிய ஒரு கப்பல் துறைமுகம் இருந்தது. ஒரு காலத்திலே மிக பழமை வாய்ந்த நல்ல வெற்றிகரமாக
தொழில் செய்து கொண்டிருந்த அந்த கப்பல் துறைமுகமானது கடந்த சில ஆண்டுகளாக மூடி கிடக்கின்றது. இதனால் அங்கு இருக்கின்ற தொழிலாளர்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். நம்முடைய சாகரத்னா அந்த திட்டத்தின் மூலமாக இந்த கடலூர் கப்பல் துறைமுகத்தை மீண்டும் துவக்கப்பட வேண்டும். அங்கே 2 கப்பல்கள் நின்று செல்லுவதற்கு ஏதுவாக இருந்தது. ஆனால் அது பற்றவில்லை, போதவில்லை என்ற காரணத்தினால் மூடி கிடக்கின்றது. இதை மென்மேலும் விரிவுபடுத்த வேண்டும். அதன் மூலம் தொழிற்சாலைகளும் வளர வேண்டும், தொழிலாளர்களும் வளர வேண்டும், நம்முடைய மாவட்டத்திற்கு வருவாயும் பெருக்க வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Sri M.K. Vishnu Prasad. Thank you, Chairperson, for giving me the opportunity in speaking on the Protection of Interest in Aircraft Objects Bill 2025. See, going in a flight, in an aircraft, was a dream. Once upon a time, it was a dream. Then it became a passion. After that, ambition. Then luxury. Now it is a compulsion. Everybody wants to go in flight at a cheaper rate, cheaper, safer and faster. That is the idea to travel in aircraft. How do we achieve this safer aircraft? Going safely is a billion-dollar question. Nowadays, lot of accidents takes place. The various reasons for accidents may be weather, maybe engine gear failure, landing gear failure, altimeter error, or a pilot's judgment, unlike our honorable member, Mr. Rudy, who is an expert. Of course, weather also plays a major role. At the same time, to get a price at economical price to fly, what are the requirements? We need more competition. We need more competition so that the price will come down. The demand is so high. A lot of people want to go in the flight. That is the reason we need more competition. And of course, the government has to have a cap on the pricing. In order to achieve this, why I have to talk about this bill? The Protection of Interest in Aircraft Objects Bill. See, this Aircraft Objects Bill, actually, I want to say a few things about before entering into the bill. We have 149 airports in India, 1,550 aircrafts. It is the 3rd largest domestic aviation market, and 1,300 new orders for more aircrafts, and 190 million passenger traffic is happening in India. See, overnight this cannot happen. Someone will sow the seed, and somebody will enjoy the shade of the tree. So in order to achieve this, we should move this bill at an immediate pace. I welcome this bill at the same time with some observations. See, this bill, initially it was introduced in Rajya Sabha, I think in February 2025. It is in order to align the international standards with Indian standard, Indian framework, in accordance with the Cape Town Convention. Simply, in order to achieve a cheaper price and a safer flight, we need more aircrafts, and we need more good aircrafts. See, initially I was thinking all the airlines who are operating have their own flights. But now I realized somebody is leasing it out. The airlines who are operating in India, 90% are leased, rented aircrafts. Most of the rental hub takes place from Singapore, mostly from Singapore and some more country. One more country is there. But after this bill, I think Gujarat will be having a big swing. The gift, that is Gujarat International Niftek City, will be a major aviation leasing hub. I welcome it. This bill was introduced in Rajya Sabha. This is Cape Town Convention was signed in India by India in July 2001.
but I think here Minister said 2008. Okay, I stand corrected. In 2008, it was signed. Why it was signed? See, this bill will ensure the lessor, that is whoever is giving the aircraft, in case there is any default of payment by the operators, immediately they can call back the aircrafts. That was a major problem with these airline operators. It was always under litigation. Whenever there is any problem, whenever there is a bankruptcy in the airlines, like how it happened in Kingfisher, in Jet Airways, in many more, in Go Air, these aircrafts, these airline operators had a problem financially. Immediately they cannot, the person who is lending the aircraft, who is giving the rent, these operators, if they default, these airlines cannot be taken back. But this Cape Town Convention was a breakthrough. But when it was signed in 2008, for 2001, but till now it is being dragged. This government was very slack. They didn't have a proper vision in that time. Now out of hurry, they wanted to pass this bill. In the meantime, what happened? So many investors, creditors, whoever has rented these aircrafts had a lot of problems. They want to get back the aircrafts, but they cannot get in time. So they have to approach the court. This was the saddest part. In 2019, Jet Airways went to court. In Kingfisher Airlines, when it was having a bankruptcy in 2012, that had a problem. In 2015, SpiceJet has to deregister 6 Boeing 737 by only going to court. This delay echoed very globally, very bad atmosphere about India. Everyone are afraid to operate in India, to give the rent, the aircrafts for rent in India. That is the reason there was a premium cost, premium leasing cost and financing cost because of this. Had the bill been passed earlier, now after the bill, we are going to observe. The bill has to ensure that the airfares will come down. Because of the premium leasing prices, leasing cost, it has been unnecessarily shifted to the innocent poor citizen of India. They have to bleed to get the airfares, to get travel in the flights. That is the reason this bill is important. If the bill is passed today, definitely the airfare should come down. Out of pressure from the global creditors and industry players, this government is rushing to revive the bill. And very evident that not out of commitment to fixing this Indian bankruptcy and insolvency system. Now let us go into the bill's salient features. 2-3 minutes, sir. DGCA will have the absolute authority in having the record of who is having the license. And they have the absolute power to register and deregister, which is of course important. And most importantly, the creditor remedies. See if there is any default in the payment. The creditor can call back the aircraft. He can either sell the aircraft, or he can again lease the aircraft to somebody else, or he can take back the money from the money earned out of this aircraft. Lastly, priority over domestic insolvency, sir. It supersedes all other Indian insolvency and bankruptcy code, IBC code. But where is the area of concern? Where is the ambiguity we have to see, sir? This bill brought in very urgent, indicates a reactionary response. Then there's conflict with domestic insolvency framework. This bill will have a financial instability because the court will intervene on and off. That will be a major problem. Because it is superseding IBC, the court will intervene definitely, sir. Most importantly, there is non-compliance by DGCA. Despite our obligation under Cape Town Convention, DGCA has refused to re-register aircraft. This has forced creditors to seek court intervention, as in Go First case, sir. Most importantly, sir. Please conclude. Yeah. 2 minutes, sir. In my constituency, Honorable Minister knows, sir. In my constituency, in Kadalur constituency, sir, there is a Neyveli, which had earlier a small airport, minor airports. It was running very well. But few years back, it stopped functioning. Now, I have requested our Honorable Minister to revive this airport
and he has graciously accepted the request, and he has already under the process of reviving this airport, sir. Thank so you. I humbly request our Honorable Minister to revive that, sir. And last but not the least, sir, the burning issue everywhere. We have 190 million people traveling in a year. This is a huge sector, but the prices are exorbitant, sir. And the Honorable Minister, in his reply during the star question, he was telling that the pricing is based on dynamics. It's a dynamic pricing system. When there's a demand, obviously the prices will go up. When there are more people watching the website, the price varies, depending on the demand. Sir, in this country, even the agriculture, sir, that is a basic for everybody, for the life. The agriculture cannot decide the price for its producer. The sugarcane price is fixed by the government. The rice, bajra, cotton, all the prices are fixed by the government, sir. But the two major sectors, oil sector and these airfares, are not fixed by the government, sir. They are let free. The corporations, the companies can decide the price, sir. Here the government has to take cognizance of this case. We should have the price capping, sir. I once again support the bill, but if this bill passed, world is watching, people are watching, the price fare has to come down because the premium lease rate is going to come down. Definitely it has to be reflected in the airfares. I humbly thank you for giving me the opportunity, sir. Thank you, sir. माननीय सदस्य से अडा कृष्ण जी वो तो करना ही चाहिए ना. Honorable Speaker, I am grateful for the opportunity given to me to speak on the protection of interests in aircraft objection bill 2025. So first of all, I would like to express my gratitude to the Honorable Minister, Sri Naidu ji. Whenever I meet him and request him for our area, he is always very responsive and a quick response is given by him. Sir, my constituency, Kalburgi, is home to a world-class airport boasting the second largest land strip in Karnataka after Bengaluru. However, despite this infrastructure, the region continues to face significant challenge in terms of flight connectivity and pending development projects. Sir, Kalburgi has been accorded special status under Article 371J of the Constitution of India due to its historical inequalities and socio-economic backwardness. To ensure the much needed development and economic growth of the region, it is imperative to establish regular flight connectivity between Kalburgi and other major cities such as Bangalore and Delhi. Therefore, I urge the government to facilitate daily flights on the following routes: Bangalore, Kalburgi, Delhi, Delhi, Kalburgi, Bangalore. In addition, several long-pending development projects in Kalburgi Airport require immediate attention. The DGCA granted permission for all-weather operations, including night operations, on May 17, 2023. However, infrastructure upgrades are essential to fully operationalize these permissions. Currently, Kalburgi has only 2 parking bays. Once the night landing simulator trial is completed, at least 2 additional parking bays will be required. Sir, currently Kalburgi Airport has only 2 parking bays. Once the flight landing is completed, at least 2. Now next, I urge the government to expedite the following critical pending projects of Kalburgi Airport. 1. Resumption of flights to Delhi, increased flight frequency between Gulbarga and Bangalore, establishment of maintenance, repair and overall facilities, that is MRO, introduction of Indigo flights and expansion of routes, expansion of parking bays. Here I would like to mention that Sri Honorable Leader of Opposition, Rajya Sabha Mallikarjun Kharge ji and I have urged relentlessly pursue this matter, but to no avail. Though through this, I strongly urge the Honorable Minister to ensure daily flight operations between Kalburgi and Bengaluru, as well as Kalburgi and Delhi. Additionally, I request the Ministry to issue immediate instructions to expedite the completion of these long-pending infrastructure projects. I would end my intervention with a sincere hope that the government will take swift action in this regard. Thank you, sir.